So, a very good evening to all of you. Hope I'm audible as well as visible to you people. So, this is our last class of the fundamentals of computing technology that we are going to discuss today. Okay. So, in today's class we'll be talking about the fundamentals of computing technology. And after this completion of fundamentals of computing technology, our entire fundamentals of ICT would be over. And then tomorrow we will be discussing about the current affairs or current events of 1 year that are related to information and communication technology. Okay, tomorrow I'll come up with a compilation of ICT for 1 year. For entire 1 year, I'll be giving you the current affairs till October 2020. Okay, till October 2020, we'll be discussing the current affairs also. So, let us just start off with the proceedings. Just a minute, give me a second. Okay. So, without wasting any further time, we'll talk about the computing systems. अगर हम इसकी बात करें तो यूपीएससी मेंस में every alternative year there is a question from this area. Every alternative year there is a question from this area, and in this prelims you see there is at least one question from this area. Good evening, Nidhi. So at least one question is there from this area. So first you see, as we have discussed in the fundamental of IT, I have discussed about in the previous lecture. Those are joining from this lecture only. You are requested that you should join the previous, or you should see the previous lectures of the same series also. Generation of computers. In the previous lecture, we have talked about generation of computers. We have talked about advancement of computers up to present generation, that is 2020. That was the fifth generation. Fifth generation was nothing but just a sub-component of this fourth generation. So this is all we have discussed. So this entire information technology part, you see, we have started off with the concept that this computer is a device which is used to process the information. Process the data. We have the data. The data is converted into the information with the help of this computer. What's the difference between data and information? Information refers to meaningful data. Information refers to what? Meaningful data. Okay. Again, you see, in this computer specific assembly, there is a device called processor. There is a device called processor, which is regarded as the heart of computer. Which is regarded as what? It is regarded as the heart of the computer. When I say heart of the computer, means that it is the one which is performing the work of processor, or you can say processing the data. जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है, वो डेटा प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर कौन करता है? प्रोसेसर इज द वन विच इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा ओवर देयर. And this computational technology is all about development of this processor.
ओके, डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोसेसर। बेटा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कि नहीं होती है? कैलन, हाँ, what is the full form of CPU? CPU's full form is what? It is central processing unit or not? Or in common terms we call it processor. Yes, I think things are making sense. Now you see this in this computational technology, what we have seen over a generation, like from first generation to second generation to third generation to fourth generation. So in that case scenario, in, or you can say the fifth generation, which is the ongoing generation. So what is the thing, or what is the development that you have seen? There has been a reasonable reduction in the size. We started from what? Very big or very huge assembly of computer, very big or huge assembly of computers. We ended up where? We ended up reducing the size. And you see now perhaps a more powerful computer is in your pocket in the form of mobile devices. You see, every single day you see mobile devices. So these mobile devices are perhaps much more powerful computer than that of the first generation computer. So our major emphasis has been on the reduction of the size of computers. And how this reduction has occurred, this is the main or core area of discussion of this computational technology. You see, initially in the first generation, you see, we had the computers which were having what? Which were having vacuum tubes. Which were having what? They were having the, this is a fifth generation Kellen that we are using. Fifth generation is nothing. Fifth generation is just an advancement of the fourth generation, which was microprocessor based. Okay, previous lecture also you need to see for that purpose. So this is just an advancement of the fourth generation. Like you can also say, call it the second part of the fourth generation that is presently ongoing. The emphasis is on the reduction of the sizes. Okay, so these vacuum tubes are the one which were used. As a result, the size of the computer used to be very huge. And these vacuum tubes were the one which were playing a very important portion of this processor. Then slowly and gradually you see the size of the processor has reduced. The size of the processor has reduced. Then you see what we had. These vacuum tubes were the one which were replaced by the transistors. And these transistors are the one which are still used. And what is the function these transistors are performing? This transistor performs two functions in a computer. This transistor is known as what? A switching device. This transistor is known as what? It is known as a switching device. What is the purpose of a switching device? The purpose of a switching device is to turn off and on a computing system. If it is in 0 state, it is off. If it is in state of 1, then it is set to be on. The purpose is what? The purpose is to turn off. The purpose is to turn on this computer. Okay. This is the main function that is being performed. Okay. Now you see. So these transistors are the one which are used as what? As switching device. And it was perhaps due to the use of these transistors only that there has been a reasonable reduction in the size of computers all over generations. Okay? It is because of using these transistors, because these transistors are the one which are very smaller in size than that of the vacuum tubes. Now our major emphasis is like we are going on reducing the size of transistors day by day, reducing the size of transistors every single day. हम रोज यहाँ पर good evening Asta, we are every single day we are doing what? We are reducing the size of these transistors. Now when we are reducing the size of these transistors, our
what we are doing actually is we are just shrinking its size. Number one, we are just doing what? We are just shrinking its size, and we are increasing the number of components on the transistors. We are increasing the number of components on the transistors. That means it is a double benefit process. Double benefit, like what we are doing, we are just reducing, cutting short the size of the transistors, as well as what we are doing, we are also increasing the number of components over there. To this, or to certify this, there is something called Moore's law. There is something called what? There is something called Moore's law. Moore has made, he was the co-founder of Intel. He has made a law, or he has given a postulate. What does that say? He said that after every 18 months, the size of transistor is halved. The size of the transistor is halved, and speed of transistor is doubled. Again, dual benefit. The size, let us say if this was the size of an initial transistor, after every 18 months the size would be halved. Then again after 18 months the size would be halved. Then again after 18 months this size would be halved. But now the question arises, the important question that arises is, can there be a limit to Moore's law? Is there any possibility that there is a limit to Moore's law? The answer is yes. एक छोटा सा क्वेश्चन दी, इसको सोच, एक छोटा सी क्वेरी मैं आपको देता हूं, आप सोचिएगा. Do tell me also. If I am going to reduce the size of something, forget about transistor, there would be a limit of miniaturization or not? Don't you think beyond a limit the size could not be reduced? Don't you think that beyond a limit the size could not be reduced? There would be a limit to Moore's law, and when Moore's law will fall, what is our solution? When the Moore's law is the one which is going to fail, what is going to be the solution? तब हमारे पास इस पर क्या solution होगा? जब Moore's law यहाँ पर हमारे पास fail हो जाएगा. ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास. एक तो कंप्यूटर बनाना बंद कर दे, कंप्यूटर्स को फिर बनाए ही ना. ठीक है. सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बचता है, या तो हमें फिर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए. Either we stop making the computer or we got to find some alternative technology. I don't think so this can be a feasible option. कंप्यूटर बनाना तो बंद नहीं कर सकते. कंप्यूटर तो चाहिए हमें, और छोटा कंप्यूटर भी चाहिए और फास्ट कंप्यूटर भी चाहिए. पर मूरेज लॉ, जब मूरेज लॉ का सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हमारे जितने ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मतलब जो हम प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर को यूज करते हैं उनको हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स कहते हैं. फिर इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का क्या होगा? ये तो बंद हो जाएंगे. This itself is going to be a very big challenge. Now how we are going to cope up with this challenge? अब इस चैलेंज के साथ हम कैसे कोप अप करेंगे? The answer to it lies in alternative technology. What is that alternative technology? वो alternative technology क्या है? Yes. I am inviting the comments also. If you want to answer, you can answer. And what can be that alternative technology? You see, as regards this finding this alternative technology is concerned. So in this alternative technology, you see, transistors को हम size को छोटा कैसे कर रहे थे? How we were reducing the size of these transistors? Half कर रहे थे. और smaller components were the one which were being placed over. Smaller, यानी कि we were also reducing the size of the components which were being placed. Size of the components which were being placed on these transistors. The process of putting these components, on transistor is called lithography.
and by advanced lithographic techniques we were continuously reducing the size of transistors. We were continuously doing what? We were continuously reducing the size of transistors by these lithographic techniques. यानी कि these components which are being installed, we have to find smaller of them, or we can say micro components, और छोटे, बहुत छोटे कंपोनेंट्स जो इनके ऊपर ट्रांजिस्टर के ऊपर लगाए जा सके, तभी हम जाके यहाँ पर इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं. I hope things are making sense to you people. Okay, so this is the one which we require for the purpose. What is our requirement? The requirement with us is that we should find the smaller component. We should find the smaller component. और ये smaller component यहाँ पर function क्या करते हैं? What is the function? What are the two important function of the computer? Yes, tell me. Two important function is storage or process. What they are doing? They are doing the storage. Computer is used to store the data. Computer is used to process the data. This is the two things that they are doing. Processing is done by transistor. Transistor is having component. We got to find the smaller component. This is something we must strive for in the upcoming technology. अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन उठता है, द क्वेश्चन इज कि हमें जो कंपोनेंट्स, जो स्मॉलर कंपोनेंट्स यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के ऊपर लग रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर की नीड है ताकि हम छोटा कंप्यूटर भी बनाए, फास्ट कंप्यूटर भी बनाए, एक्यूरेट कंप्यूटर बनाए, स्पीडी कंप्यूटर भी बनाए, उसके लिए हमारी यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? यानी कि वी गॉट टू द फाइंड द कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी स्मॉल in size, very small in size. And where is the answer to this problem? How can we find those components? इन components को यहाँ पर ढूंढेंगे कहाँ? बेटा अब geos में क्या मतलब है? This I am not able to like inculcate in my lecture. ठीक है, यहाँ पर geography and science are two different things. And geography as well as this, what you can say, lithos you are using in your history also sometimes. So these are two different things, right? Okay, so a technology I think is quite different. Here you see what is the solution. I hope things are making sense. What is the solution that should be find out in order to reduce the size of computer? That means reduce the size of processors and provide a speed, provide a storage. इन तीन challenges को meet करने के लिए हमें कोई solution ढूंढना है. Solution क्या? The answer is कि क्या कुछ biomolecules को यहाँ पर use किया जा सकता है? Can we use certain biomolecules which have the capacity to store the data, which have the capacity to process the data? They can store the data as well as they can process the data. Can we have that kind of biomolecules? Can we have those biomolecules which can be used to process the data as well as which can be used to store the data? Answer is yes. We have those biomolecules. And they can also be serving as a replacement. So the biomolecules or the computers where the biomolecules are used as a switching device are known as biomolecular computer. Biomolecular computer. अब इन बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स आर द वन व्हिच नीड टू हैव टू प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ these biomolecules? First is storage and second is they can process the information. I think things are making sense.
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अभी लाइव क्लास है तो यहाँ पूछ सकते हैं, बाद में आप लोगों को इशू हो जाएगा इफ यू आर हैविंग डाउट। स्टोरेज की अगर बात करें तो ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है जो यहाँ हमारे लिए डेटा को स्टोर कर सकता है? What can be that biomolecules which can store the data for us? Let us take an example, DNA. DNA. You see, can DNA store the data? Answer is yes. How DNA can store the data? आपकी जितनी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स, everyone's hereditary information is stored where? DNA. And you see, it is only 1% of the DNA that the scientists have able have been able to explore. DNA जो है हमारे पास, उसका सिर्फ 1% साइंटिस्ट कम्युनिटी एक्सप्लोर कर पाई है। दिस इज द सिचुएशन विद डीएनए। अब उसके साथ साथ क्या डीएनए प्रोसेस भी कर सकता है? कंप्यूटर में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या भाई, उसको प्रोसेसिंग भी आनी चाहिए। Yes, DNA can also process the data. How the DNA can process the data? You might have heard of a process called protein synthesis in your body. When we talk about protein synthesis, जब हम यहाँ पर protein synthesis की बात करते हैं तो protein synthesis में DNA is the one which helps in production of mRNA, and these mRNA are the one which helps in what? It helps in protein synthesis. It helps in the process of protein synthesis, and this protein synthesis is responsible for your biological life. There are more than 10 lakh of protein in your body, and these 10 lakh of protein are the one which are responsible for carrying out your biological cycle or your life on earth, or your life on earth. अब आपकी जो लाइफ है अर्थ पे वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन दिस प्रोटीन्स। तो यानी कि डीएनए इज द वन which can also process the information. So we had two problems. One was storage, स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और हमारा मेजर इशू क्या था? साइज। साइज अगर हम देखें तो डीएनए का एक साइज होता है 1/40,000 ऑफ डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। अब साइज तो फिर हमारे लिए कोई चैलेंज है ही नहीं। तो यानी कि अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या हम डीएनए को कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस which are required for a processor. Which are required for what? Which are required for a processor. So this DNA, when used as a switching device in computer, the computer is known as a DNA computer. The computer is known as DNA computer. उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डीएनए कंप्यूटर बोलते हैं। अब डीएनए हमारे पास क्या है? एक बायोमोलिक्यूल्स है, and these biomolecules are very 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 small in size. बहुत छोटे होते हैं। They cannot be seen with the naked eyes. Sometimes they cannot be seen with a normal microscope also. अब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं इनके साथ एक मेजर चैलेंज आ जाता है। देयर इज अ मेजर चैलेंज that is associated with these biomolecules. And what is the major challenge? The major challenge is failure of classical physics. Failure of what? Failure of classical physics. मतलब कहने का क्या है कि अब अगर आप यहां पर if you can see, what is the role of a classical physics? The role of classical physics is classical physics govern the behavior of bodies.
द क्लासिकल फिजिक्स गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ बॉडीज। पर जब ये माइक्रो लेवल यानी कि ये बायोमोलिकुलर लेवल पर आ जाती है, द फिनोमिनन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स फेल्स। अब क्लासिकल फिजिक्स यहां पर क्या हो जाती है, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। और जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई तो अब इनका बायोमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर कंप्यूटर का बिहेवियर कौन गवर्न करेगा? Who is going to govern the behavior of this classical computer, sorry, yes, the next generation और बायोमोलिकुलर कंप्यूटर। अब इनके बिहेवियर को यहाँ पर कौन गवर्न करेगा? दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज। अब यहाँ पर इनके चैलेंज को कौन, ये बहुत मेजर चैलेंज है हमारे पास किसका? मैकेनिक्स का। क्योंकि जब मैकेनिक्स फेल हो जाएगी तो अब हमें ये देखना है कि इनके बिहेवियर को गवर्न कौन करेगा, किसके थ्रू? कोई तो यहाँ पर फिनोमिनल होगा जो क्लासिक हमारे जो आने वाली जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन कंप्यूटर्स है, उनके बिहेवियर को गवर्न करेगा। एंड व्हाट कैन बी दैट? अगेन यू सी वी हैड अ मेजर चैलेंज। एक चैलेंज से निकले थे, साइज को रिडक्शन करने में बायोमोलिक्यूल्स को मिल गए, पर बायोमोलिक्यूल्स के साथ अपना चैलेंज है। बायोमोलिक्यूल्स के साथ चैलेंज क्या आ गया कि ये यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, या आप कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स फेलियर। अब जब सब यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेलियर हो गई तो यानी कि हमें एक नई मैकेनिक्स चाहिए, एक ऐसी मैकेनिक्स which can govern the behavior of minute particles, which can do what? Which can govern the behavior of minute particles. And what are those minute particles? The biomolecules. And this mechanics is known as quantum mechanics. This mechanics is known as what? This mechanics is known as what? This mechanics is known as quantum mechanics. Quantum mechanics governs the behavior. अब यहाँ पर एक क्वांटम मैकेनिक्स बिहेवियर को गवर्न करती है। देख थोड़ा बात करते हैं व्हाट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। लेट अस टॉक इन ब्रीफ अबाउट दिस क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मैकेनिक्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, that governs the behavior of subatomic particles. Subatomic particles. Subatomic particles क्या होते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का। ओके, देखो अभी तक हमें ये लगता था, पहले देखो हमें ऐसा लगता था, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट इरेज इट। Initially we used to believe that it was element which was indestructible. एलिमेंट हो गया जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये हमारे पास एलिमेंट है, ये एलिमेंट इंडिस्ट्रक्टिबल है। दैट मीन्स एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। देन वी केम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स। हमें लगा अब एटम है, वो एटम यहाँ पर इंडिस्ट्रक्टिबल है, एटम्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर हमें पता लगा नहीं यार, एटम्स आर द वन which are also comprising of a nucleus, Rutherford model and all you might have studied in your earlier classes. तो अब ये एटम है, इस एटम को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर हमने माना कि यस एटम कैन बी ब्रोकन डाउन, इट इज हैविंग अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके आसपास जो है हमारा क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर देयर इन द पेरिफेरी। ये हम ऐसा यहाँ पर बिलीव करते थे। अब जब हम इतना यहाँ पर मानते थे तो अभी तक तो हम इसी थ्योरी पर बिलीव करते थे दैट कि the atom is the one which is having a nucleus, proton and neutron are present and these electrons are the one which are revolving around them in a periphery. इस पेरिफेरी में यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहे थे। पर अब अगर देखा जाए तो there is, after the discovery of quantum mechanics, it has been found out that even these protons and neutrons are destructible, and these protons and neutrons can also be broken down. इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्वार्क्स, जैसे लेप्टन्स, ओके,
जैसे मेसॉन्स एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट बेरॉन्स, हाइड्रॉन्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलके यहाँ पर बने होते हैं। और इन पार्टिकल्स की जो स्टडी करता है, स्मॉलर पार्टिकल माइन्यूट ऑफ द पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज डन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स एंड आल्सो प्रेजेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ बायोमोलिकुलर कंप्यूटिंग। बायोमोलिकुलर कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकता है। अगर हम इसके बिहेवियर को स्टडी करना है क्वांटम मैकेनिक्स से कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो है ही इन सब पार्टिकल्स की स्टडी। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस। ओके, आई होप you people are getting, and if you have anything as such to ask, you can ask. I am also simultaneously putting a very keen eye onto your comments कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं मुझसे। अब देखो, अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है, I hope quantum mechanics is clear. This quantum mechanics is the one which is governing the behavior of subatomic particles. So in the era of computing or the next generation computing, we will be talking first about the greatest of all, quantum computing. Quantum computing. What is quantum computing? A computer which is based on quantum mechanics. That can be a biomolecular computer like DNA computer. That can also be a protein computer because protein can also store and process the information. That can be a peptide. Sub peptide protein से भी छोटा होता है, तो peptide computer also. ठीक है, any computer which is based upon quantum mechanics is the one which is known as what? Which is known as quantum computer. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये चीजें बुक्स में समझ में नहीं आएंगी। बुक्स में अगर देखेंगे तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई टू पे हाई अटेंशन टू इट। नाउ यू सी, here you see, as regards this quantum computers are concerned, so the quantum mechanics basically works on two concepts. The quantum mechanics basically works on two concepts. One is called superposition and another is called entanglement. I am writing it over here. Second is called what? Entanglement. Now let us see what is the difference between the two. Okay, what is the difference between the two? First we will try to understand what is superposition. First we will try to see what is superposition all about. You see, when we talk about the superposition, so सबसे पहले superposition जनरल फिजिक्स में समझने की कोशिश करते हैं, ऑर्डिनरी फिजिक्स में। Let us say this is a wave. Let us say this is W1, wave 1. Another we have a wave called WT. When these waves are superimposed onto each other, we get a new wave. And this new wave, let us say it was having an altitude A1 and it was having an altitude A2. This wave, new wave, will have an altitude A1 plus A2. This new wave is the one which is having an altitude A1 plus A2. यहाँ पर ये wavelength नहीं add होती है. This is something which is not added, but this altitude is something which is added to this. This is superposition in ordinary sense. Now when we talk about superposition in quantum mechanics, so superposition in quantum mechanics means, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो स्विचिंग डिवाइस के तौर पे हम यूज करते हैं। दे एग्जिबिट टू स्टेट्स 0 and 1. 0 and 1 means what? At one time either they can be in 0 state or they can be in 1 state. They can be in 1 state. This 0 and 1 are the two states of a classical computer, traditional computer, the computer which we are using today. And at one time these can be in 1 state. Either they can be in 0 or they can be in 1. या तो ये 0 में हो सकते हैं, ये 1 में हो सकते हैं. Or is the word, like in red color I am writing. But what does superposition in quantum mechanics means is that
they can exhibit both the states, 0 as well as 1. Like these two are the overlapping states, 0 as well as 1 are the overlapping states. Like the quantum computer can exhibit both the states. Both states can be exhibited by this quantum computer. एक साथ ही दोनों की दोनों states को exhibit कर सकते हैं कौन? Quantum computer. Okay, quantum computer. I hope things are making sense to you people. Now, जब ये दोनों स्टेट्स को एक साथ एग्जिबिट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन. दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन इन द सेंस दैट कि it would be a kind of like you can say ultra version of the computers. Modern computers आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना फास्ट कंप्यूटर. और साइज भी हो सकता है. इवन द साइज ऑफ द कंप्यूटर कैन बी दैट कंप्यूटर कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज. माइंड दिस वर्ड, द कंप्यूटर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. ऐसे कंप्यूटर को हम बनाने के मतलब तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं, या वी आर मूविंग और वी आर फॉर्जिंग अहेड to make some like such exceptional computer. एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 का ही देता हूँ. 2020 में गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा साइकामोर. और गूगल कहता है ये मेरा 54 बिट का क्वांटम कंप्यूटर है. और ये 54 बिट का जो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, गूगल सेज कि जो हमारा प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर है वो जिस एल्गोरिथम को या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 10,000 ईयर्स लेगा, 10,000 ईयर्स लेगा, उसको हमारा कंप्यूटर साइकामोर सिर्फ 200 सेकेंड्स में सॉल्व कर देगा. सी द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर एंड द सुपर कंप्यूटर और द क्लासिकल सुपर कंप्यूटर. यानी कि आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, the computer that we are using today, उससे कितना पावरफुल होगा. See what is the difference between 10,000 years and 200 seconds. This is what we can achieve. This is what Google has claimed to achieve, and this phenomenon is known as quantum supremacy. This phenomenon is known as what? This phenomenon is known as quantum supremacy. Google has set to attain this quantum supremacy. This is because of what? This is because of this superposition. This is because of this superposition that simultaneously it can exhibit in both states. एक एग्जांपल देता हूँ, क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर्स को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग बिट्स यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्यूबिट्स यूज करते हैं, इनको क्वांटम बिट्स बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड, आपको पता है जब भी हम 1 बिट कंप्यूटर क्वांटम 1 बिट क्लासिकल कंप्यूटर की बात करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स? व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर हियर? द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2 to the power 1, that is 2. When we talk about 2 bit quantum a normal computer, the possible number of outcomes is 2 to the power 4. These two outcomes can be in the form of 0 0 or 0 1. ठीक है, these two outcomes can be in the form of 0 0 or 0 1. These 4 outcomes can be in the form of 0 0 0 1 1 0 1 1. 4 outcomes can be there. If we are talking about a 3-bit system, then it can have 2 to the power 3. That means 8 outcomes are possible. अब ऐसे ही क्वांटम में 1 बिट है, 2 outcomes are possible, 0 or 1. Sorry, not this is not 0 0 1 1. This is 0 or 1. Okay, this is 2 qubit. Then it will be having 4 outcome, 0 0 0 1 0 1 1. Similar, 3 bit is having 8 outcome. Now where the difference comes? Now let us see where the difference comes. The difference comes when, अब इसके आउटपुट की बात करते हैं. मैंने आपको बताया था एक टाइम में क्या करेगा, सिर्फ या तो 0 को एग्जिबिट करेगा या 1 को एग्जिबिट करेगा. तो 1 बिट का क्वांटम कंप्यूटर जो है, इट विल बी हैविंग व्हाट, 1/2. दैट इज out of the 2 outcomes 0 and 1, it will be processing 1. 4 bit, 2 bit, 1/4. This is 1/8. This is 1/4 outcomes. Only 1 it can process at a time. 1 it can process at a time.
When it comes to quantum computer, 1 by 1, 4 by 4, 8 by 8, you see the difference. जितना बड़ा बिट्स होता जाएगा, जैसे जैसे बिट्स का डिफरेंस आता रहेगा, ऐसे ऐसे आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर इज द वन व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ अप्रोचिंग क्वांटम सुप्रीमेसी. There's something which is on the verge of achieving what? Quantum supremacy. Quantum, जैसे जैसे बिट्स का साइज बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे आप लोग देख रहे हैं, उतना ज्यादा ये पावरफुल और उतना ज्यादा फास्ट सिस्टम हमारे पास होता जा रहा है. व्हाट सिस्टम? क्वांटम कंप्यूटिंग. ओके, दिस वाज सुपरपोजिशन. सेकंड was entanglement. What is entanglement all about? When we talk about this entanglement, so let us take an example. Let us say we have a ray of light. Let us say we have what? We have a ray of light. It has struck the medium, and after striking the medium, you are aware that a part of it is the one which will be refracted, and a part of it is the one which will be reflected in the same medium. A part of it is the one which will be reflected, and a part of it is the one which will be refracted. I'll take a query. Okay, sir, if there will be very, very, very small computer in future, we can't see in the naked eye. Yes, so true. See, when we talk about Mr. Pawar, when we talk about this smaller computer, it is always not necessary to be a personal computer. जरूरी नहीं है कि वो एक पर्सनल कंप्यूटर ही है और हम उसके साथ जो है मतलब like we are working on laptops and MacBooks. Not like that. In the computing world is the one which can have multiple applications. The computers are the one you see which can all even be used as sensors. The sensors are also a kind of computer. The small component, your watch, Apple Watch itself is a kind of computational devices. So these computational devices are the one which can find numerous applications. ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि सर हम उनको जब नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं तो कैसे हम लोग उन लोगों को यूज करें. You might have heard of something called Internet of Things, जिसको हम परवेसिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं. यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था. आप लोग चाहें तो मेरा प्लस पे इसका अनअकैडमी प्लस पे मेरा डिटेल लेक्चर भी है, वो भी देख सकते हैं. तो अब इसके साथ हम देखें तो इसको परवेसिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, इसको यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग भी यहाँ पर बोलते हैं. तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. इसका मतलब होता है दैट अ नंबर ऑफ मशीन्स आर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2017 में, मैं वो क्वेश्चन ही आप लोगों को बता देता हूँ. व्हाट वाज देयर इन दिस क्वेश्चन इज दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे यू गेट अप. ठीक है, आप उठते हैं, आप अपना अलार्म स्विच ऑफ करते हैं. जैसे ही अलार्म स्विच ऑफ करते हैं आपके बाथरूम का गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. फिर उसके साथ आपके बाथरूम का जो स्मार्ट मिरर है वो स्मार्ट मिरर ऑन हो जाता है और वो बाहर का टेम्परेचर भी बताता है. ओवरहेड जो वाटर टैंक्स होते हैं उन ओवरहेड वाटर टैंक्स में वाटर का लेवल है वो भी बताता है. फिर उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं और आपके फ्रिज में जो एग्स हैं वो एग्स यहाँ पर कम है तो ये ऑटोमेटिकली ग्रोसरी शॉप को मैसेज भी भेज देगा और ग्रोसरी शॉप यहाँ को आपको अंडे भी सप्लाई कर देगी या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है. और उसके बाद व्हाट विल हैपन इज लाइक द पेमेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिड्यूस्ड. When you move to your office, automatically all the lights of the house would be switched off. When you come from your office, and if your floor is like the top floor, then will be the automatically AC would be turned on half an hour before. अब इस पूरे के पूरे एलिमेंट में मुझे ये दिखाओ या सोचो आप कि where is the human element? Where is the human element? What is the role of human element? That is zero. What is the role of human element? The role of the human element over here is zero. ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. यानी कि कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आर द वन व्हिच आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. व्हेन these computational devices are the one which are communicating with each other, in that case scenario the size of these should be small. आप क्या फ्रिज में कंप्यूटर लगा सकते हो? नो. The size of this computer has to be very small. It has to be, after all, it is performing the task of what? It is performing the task of a computing device. It is processing the information. This is what computer is all about.
when we comes to like putting all the lights off, it is also possible with the help of a processor. Like China is the one which has come up with a special shirt, and in this special shirt it has used sensors, and whenever like the sensors are the one which are just observing the sweating over there, the automatically it is also equipped with a fan. The shirt is equipped with a fan. The fan turns on. The fan is something which turns on. तो अब देखो वो भी तो computing devices है, उसमें जो लगे हैं which can sense. So it is not necessary we are going to use it as a personal computer. ठीक है, I hope your doubt is clear. Not necessary. The one which cannot be used with naked eye is the one which cannot be utilized. I hope your doubt is clear. If your doubt is clear, please do tell me in the comment section. Otherwise, we'll proceed on further clarification. ठीक है, अब हम entanglement को discuss कर रहे हैं. अब entanglement में basically होता क्या है कि I said, let us say there is a ray of light. Okay, let us say there is a ray of light. Or this ray of light is the one which is striking a medium. And when it is striking a medium, a part of it is the one which is refracted. A part of it is reflected in the same medium. A part of it is refracted and a part of it is reflected in the same medium. ठीक है. Now what entanglement says? Entanglement कहता है कि there is a correlation. That there is a correlation between this refracted ray and between this reflected ray. Is always welcome, Mr. Pawar. Keep on asking the doubt, right? If you have any doubt, science is all about asking the doubts. Okay, science is all about asking the doubt. Science is all about enjoying the doubt. Science is all about seeking the clarifications. Okay, in my class you can enjoy all the three things, right? See, so what entanglement say? Entanglement say that there is a correlation between this reflected and refracted ray. What is the correlation? What kind of correlation? What is the meaning of this correlation? ठीक है, वैसे तो जब हम क्वांटम फिजिक्स को स्पेस के लिए स्टडी करते हैं, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स इज आल्सो यूज्ड टू स्टडी द स्पेस रीजन, तो हम एंटेंगलमेंट को ये कहते हैं कि दो पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल यूनिवर्स में किसी भी जगह हो, कोई भी दो पार्टिकल यूनिवर्स में किसी भी जगह हो, उनके बीच में कोरिलेशन होता है. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दोस पार्टिकल. दैट इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स एम्फसाइजेस ऑन टू. ठीक है, आइंस्टीन ने भी थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी. अब यहाँ पर हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर्स में फिजिक्स जो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं देखिए. लेट अस से दिस वाज द रे ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टेड रे. आपको पता है लाइट इज द वन विच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा. जो लाइट रेज हैं उन लाइट रेज पे हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसी बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था वीएलसी. ठीक है, वीएलसी जो है हमारी जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था इस बार. तो यानी कि अब लेट अस से देयर इज वन बिट ऑफ डेटा ऑन दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड देयर इज वन बिट ऑफ डेटा ऑन दिस रिफ्रैक्टेड रे. One bit of data on the reflected ray, one bit of the data on the refracted ray. It means what? It means that if it has to deal with the security, basically, if the hacker hacks into any kind of quantum communication system, then in that case scenario, in order to have the entire data, he should have the data of refracted as well as refracted ray. He should have what? He should have the data of reflected as well as refracted ray. If he is not having, अगर मान लो उसके पास reflected ray का डेटा refracted का नहीं है, फिर भी वो हैक नहीं कर पाएगा. refracted का है, reflected का नहीं है, फिर भी वो हैक नहीं कर पाएगा. In order to hack into this system, he should have the data of both the rays, and which is practically impossible. Which is practically impossible. The hacker cannot have. That is why the quantum communication or quantum is known as the most secure system, the one who is bearing the highest security standards. Quantum communication is something which cannot be hacked. उसमें कोई हैक कर ही नहीं सकता. और quantum communication में सबसे आगे कौन है? China. China has launched a satellite based on quantum. This is known as QuES. This is known as what? This is known as QuES. QuES is one such experiment that has been conducted by China in terms of this quantum communication. अब quantum communication के लिए चाइना यहाँ पर सैटेलाइट भेज रहा है और हम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे. हमारी अगर अपनी बात करें तो हमारी
कि हमने 2020 का जो हमारा बजट पास किया निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें 8000 CR रुपीज अलॉट किया है एक प्रोग्राम को, उसका नाम है क्वेस्ट। और क्वेस्ट का एम क्या है कि हमारा अपना 54 बिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाना है हमें, और 3 फेजेस इसके डिसाइड किए गवर्नमेंट ने, 3 फेजेस में हम बनाएंगे। फर्स्ट फेज शुरू कर दिया। फर्स्ट फेज में हमने जितने भी साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट, वी हैव इनवाइटेड, like those people have already made the quantum computer, we have just invited them that you just come up and help us out, हमें भी भैया मदद कर दो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग दोज पीपल, हम उनसे बात कर रहे हैं कि भैया हमें भी हमारा क्वांटम कंप्यूटर बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम बहुत बहुत आसान होगा आपका। दिस इज व्हाट वी आर पीपल, व्हाट वी आर सीकिंग फ्रॉम। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वांटम कम्युनिकेशन जो है, क्वांटम कम्युनिकेशन, अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसके एडवांटेजेस क्या है या यूज क्या हो सकते हैं। द यूज ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इट कैन रिवैम्प द एंटायर कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। वो किसी भी पर्पस से हो सकता है। पूरे के पूरे साइबर स्पेस को रेवोल्यूशनाइज करने का काम क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकती है, कुछ भी हो। विद इन द व्हाट यू कैन से नैनो क्लिक, आई एम यूजिंग दिस वर्ड नैनो क्लिक, you can get everything you want, wherever you want, whatever you want, you can get from this quantum computing. This has so much power, this is so powerful. थोड़े से चैलेंजेस हैं। थोड़े से चैलेंजेस क्या है, कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मान लो जो क्वांटम कंप्यूटर है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, इफेक्टिवली इट कैन वर्क। इट्स अ वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ बोस्ट। बोस्ट इन द सेंस लाइक अभी तक कोई भी सक्सेसफुल क्वांटम कंप्यूटर नहीं बना। दिस इज व्हाट दे से। They said that no successful quantum computer has been built yet so far. अभी तक कोई successful quantum computer बना ही नहीं है। That is what they all say about it. ठीक है, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि it is a very expensive process. बहुत एक्सपेंसिव है क्वांटम कंप्यूटिंग बनाना या क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करना, सच में बहुत एक्सपेंसिव है। देखो, हमने सिर्फ एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात की और उसके लिए 8000 CR अलॉट किया। अब मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। 8000 CR में हम सिर्फ एक क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर बनाएंगे। अब सोचो कितना मुश्किल और कितना एक्सपेंसिव है किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को यहाँ पर बना पाना। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो दैट आर रिलेटेड टू इट। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग में हमने फर्स्ट फंडामेंटल डिस्कस किया, क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग। सेकेंड हम फंडामेंटल यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं, हालांकि इससे कम है, बट दिस इज समथिंग विच इज अचीवेबल, and that is called superconducting or superconductor computing. फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की भी। ठीक है, सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर पहले होता क्या? देखो, पहले इससे पहले सुपरकंडक्टर क्या होता है, मैं आपको एक अपना जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम है उस कंप्यूटिंग सिस्टम का असेंबली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये है हमारा जो कंप्यूटर है वो ऐसे मिलके बना होता है इन कंपोनेंट से। ठीक है, आई होप यू कैन सी द कलर। This is how it is made. This is input device, this is output device, and this is called CPU, this is called RAM, this is called RAM. Okay, now you see हमारा जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है। Okay, now we will see how our computer actually works out.
देखो अब यहां पर देखिएगा, इनपुट डिवाइस से यहां पर क्या जाता है, डेटा। इनपुट डिवाइस से यहां पर क्या जाता है, डेटा। कहां जाता है, रैम में। फिर ये रैम से कहां पे जाता है, सीपीयू। दिस डेटा इज नाउ गोइंग फ्रॉम रैम टू सीपीयू। अब रैम इसको क्या, सॉरी सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद डेटा वापस रैम में आता है और रैम से फिर जाता है आउटपुट में, जहां से आउटपुट से आपको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। आई होप यू गॉट इट। ये पूरा का पूरा जो असेंबली है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर। और अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर कैरी हो रही है, this information which is being carried out over here is carried out in the form of electrons. This is carried out in the form of what, in the form of electrons or in the form of electric current, both are same thing. ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर कैरी आउट हो रही है, जब इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रेजिस्टेंस भी होगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन to the flow of current. What is resistance? It is the obstruction that is offered to the flow of current. Current के flow को जो obstruction होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, resistance बोलते हैं। क्लियर बात है। अब देखिएगा यहाँ पर, now you see, just a minute, let me change the color। हाँ, अब इन कॉपर वायर्स में जो मैंने ब्लू से मार्क किया, इनको मैंने वायर का फॉर्म दिया। अब ये जो वायर्स हैं ब्लू वाली कॉपर वायर्स, they are the one which are having resistance। उस रेजिस्टेंस का नुकसान क्या है, what is the loss due to this resistance, let us see now। उसका यहाँ पर लॉस क्या है, अब देखो, मान लो आपका जो सीपीयू है वो है 128 बिट का। 128 बिट है जो उसकी यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, बहुत हाई है। 128 is the one which is the processing capacity of your CPU। बट आपकी जो रैम है वो रैम इसको सिर्फ 64 बिट्स पर सेकेंड पर डेटा सप्लाई कर रही है। Why it is supplying it at such a slow rate? Because it is offering, sorry, it is suffering from this resistance। It is having this resistance। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से उस पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि यहां पर ये जो 128 बिट पर प्रोसेस कर सकता है उसको 64 बिट पे प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्योंकि डेटा उस पे किस स्पीड से जा रहा है, 64 बिट पर जा रहा है। दिस इज द स्पीड एट विच द डेटा इज गोइंग टू दिस। इसका मतलब क्या है, देखो और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, गुड इवनिंग संध्या। सो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखें तो देखो, मान लो मैं आपका और अपना एग्जांपल लेता हूं। यू आर द स्टूडेंट्स, आई एम द फैकल्टी। क्या पता यहां पर मैं क्या बन जाता हूं, आपको बना देता हूं सीपीयू और मैं बन जाता हूं रैम। अब देखिएगा, अब क्या पता आप लोगों की जो समझने की स्पीड है वो बहुत फास्ट है, क्या पता आप जो बहुत तेजी से बहुत हाई स्पीड से आप चीजों को समझ सकते हो, पर मैं ही स्लो पढ़ा दूं। अगर मैं ही स्लो पढ़ा रहा हूं तो फिर क्या, देयर इज समथिंग, देयर इज अ मिस मैच ओवर हियर। यहां पे एक मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि हमारे बीच में क्या रेजिस्टेंस ज्यादा है, देयर इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन अस। और अब इस रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, what this resistance is doing, this resistance is offering a this resistance is acting as an obstruction to the flow of information। आप जल्दी प्रोसेस कर सकते हो यार, तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, तो because of this resistance can be due to a numerous reasons over here। अब अगर हम यहां पर, मैं फिर से इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं रफली। अब अगर हम इन वायर्स को जो हमने यहां पर यूज किए थे, इन वायर्स को किसी ऐसे मटेरियल से रिप्लेस कर दें जिसका रेजिस्टेंस हो 0, यानी कि जो 0 ओम रेजिस्टेंस यहां पर ऑफर करता हो, यानी कि ऐसा कोई
मटेरियल, उससे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें जो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर ही ना करता हो, विच इज नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, विच इज नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऐसे किसी चीज से हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर, बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रही। और वो क्या है, वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इज समथिंग विच इज शोइंग जीरो रेजिस्टेंस, विच इज हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। इसमें एक चैलेंज आ जाता है, बस वो चैलेंज ये आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी सुपर कंडक्टर काम नहीं करता, कोई भी सुपर कंडक्टर काम नहीं करता रूम टेम्परेचर पर। ऐसा माना जाता है कुछ मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अगर मिक्स कर दें तो दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, बट दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल only in microgravity environment or no gravity environment, and no gravity environment is not possible on the surface of earth। इसलिए रूम टेम्परेचर पर कोई भी सुपर कंडक्टर काम नहीं करता। अगर मैं आपको एक बेसिक फिनोमिनन बताऊं तो दिस टेम्परेचर अगर हमें रूम टेम्परेचर पर कोई सुपर कंडक्टर बनाना है, जैसे परसों एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने अगर द हिंदू आप फॉलो करते हो तो उसमें ऐप में एक न्यूज आई थी कि वन ऑफ द साइंटिस्ट हैज सक्सेसफुली लाइक बीन एबल टू क्रिएट अ सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको बहुत हाई प्रेशर चाहिए, और इतना हाई प्रेशर यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि लैब में तो बना सकते हो पर रूम पे काम नहीं करेगा। आपका सिस्टम तो रूम पे काम करेगा, लैब में तो ले जाके काम नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पर एक मेजर चैलेंज आ सकता है, बट दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो फ्यूचर। ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जितने भी माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कैरी आउट किए जा रहे हैं, सो दैट दिस मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स कैन बी मिक्स्ड एंड दे कैन एग्जिबिट दिस सुपर कंडक्टिंग कैपेसिटी। और जो सुपर कंडक्टिंग कैपेसिटी है उसको वह एग्जिबिट कर सके, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो कर सके, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ रिसर्चेज भी हो रही। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटिंग की। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, देखो ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में कुछ नहीं करना है, जहां सुपर कंडक्टर यूज किया था पिछली फिगर में वहां पे ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज कर देंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी जो लॉस है वो बहुत नेग्लिजिबल है, पर ऑप्टिकल फाइबर के साथ चैलेंज है, वो बहुत फ्रेजाइल है, दे आर वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। ये बहुत फ्रेजाइल है, तो अगर एक बार ऑप्टिकल फाइबर टूट गया पूरी की पूरी असेंबली आपकी खराब हो सकती है। एंटायर असेंबली इज द वन व्हिच कैन बी वेस्टेड। व्हेन दिस एंटायर असेंबली कुड बी वेस्टेड, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपर कंडक्टिंग कंप्यूटिंग हो गया, ये ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। अब हम एक एडवांस कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं, और वो एडवांस कंप्यूटिंग है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। That advanced computing is what? That advanced computing is called cognitive computing. What is this cognitive computing all about? ये cognitive computing अब क्या होती है? पहले अगर हम बात करें तो we need to understand the word meaning of the word cognition. What is the meaning of cognition? Cognition का यहाँ पर सिंपल सा मतलब होता है, देखो, thinking like human in computing language. What is the one thing that makes human superior among all the species? Forget about computer. Even in all the other living species, what is one thing that makes human superior? And that is the brain. The brain is the one which is having cognition capacity. Your cognitive capabilities, you can say. अब दिमाग है, दिमाग औरों से बेहतर सोच सकता है, तभी तो ह्यूमन है। ठीक है, अदरवाइज तो what's the difference between a donkey and a monkey and a human? Because we can think, we can act accordingly, we can learn from the things. ठीक है, तो कॉग्निशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज लाइक यू वॉच, यू लर्न एंड यू अडॉप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी रियल लाइफ से भी ले सकते हैं।
आप घर में कोई गलती करते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, गलती करते हैं, ठीक है। जब आप बचपन में गलती करते हैं तो फिर आपकी मम्मी आपको दे देती है एक दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लर्न करते हैं। लर्न क्या करते हैं कि आपको ऐसा दोबारा नहीं करना है, दोबारा करोगे ऐसे तो फिर आप क्या करोगे, फिर से आपको धुनाई होगी आपकी। तो उसके बाद आप वॉच करते हैं, आप लर्न करते हैं, आपने क्या लर्न किया। जैसे एक और एग्जांपल दो, अगर आपको पता है भाई आप बचपन में हो सकता है ब्लू फ्लेम्स देखते हो, ब्लू फ्लेम्स देखेंगे अगर आप, और आप अगर आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। आप फिर लर्न करते हो कि डू नॉट हैव टू गो नियर टू द फायर, एंड देन यू विल अडॉप्ट इट इन योर लाइफ, then you will adopt it in your life, and again you are never going to do this. This is example of what? This is example of cognition. This is what? This is the example of cognition. So now my question is, don't you think that computer is a brainless device? What is computer? Computer is a brainless device. Why do I say that this computer is a brainless device? Simply because you see, computer understands only two things, 0 and 1. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली व्हाट, प्लस एंड माइनस। कंप्यूटर को अगर हम 8 इंटू 8 भी बोलते हैं तो उसको ये नहीं पता 64 कैसे होता है, उसको ऐसे पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड रजिस्टर बेस्ड एडिशन इन कंप्यूटर। इट विल ऐड these registers, or based upon this register addition it will add 8 times, and then it will reach to this 64. It is not going to multiply 8 by 8 and giving you 64. It is going to add it. It is a total brainless device. It cannot think. Whatever instructions, whatever command we give to the computer seems to act according to those commands only. Computer does not have the brain of their own. So by cognitive computing, what we mean is that can we simulate the human behavior? Can we simulate the human behavior into the computers? क्या हम कंप्यूटर्स को इतना काबिल बना सकते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके? Can we simulate the computers in such a manner that they can think like human? And this is the very founding principles of cognitive computing. This is the very founding principles of what? Of this cognitive computing. What is the aim of cognitive computing? The aim of the cognitive computing is that computer should be made capable enough to think like humans. Just like humans can think, in the very same manner, the computer should be able to think. This is the very sole idea which lies behind this cognitive computing. यही हमारा आइडिया होता है जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग को गवर्न करता है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। लाइक द कंप्यूटर्स आर द वन विच शुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। लाइक वी लर्न फ्रॉम सराउंडिंग्स, दे शुड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। आई गिव यू एन एग्जांपल। यू माइट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड Siri. You might have heard of something called Corona. Not this Corona, COVID. Corona is a kind of assistant in window. You might have heard of Google Assistant. These all things are the one. आप जाके अभी कोरोना या Siri या Google Chrome, पर्टिकुलरली कोरोना तो सिर्फ लैपटॉप में ही असिस्ट करता है, पर अगर आप Siri पे और Google Assistant पे जाके कहेंगे कि sing me a song, they will start singing. That means what they are doing? They are recognizing your voice. They are recognizing your voice. There are apps like Google Typing. What you do, you just speak something. This is called voice to text recognition system. Voice to text recognition system. They recognize your voice and accordingly, अब आपकी voice male हो, female हो, adult हो, teenage हो, childish हो, old हो, कैसी भी आपकी वॉइस हो, उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज एग्जांपल ऑफ अगेन काइंड ऑफ लाइक वी कैन से दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद कॉग्निटिव फीचर। हमने जो कॉग्निटिव फीचर्स हैं, these cognitive features are the one which are already being like incorporated into the computing system. There is a kind of automatic system, or you can say automatic
voice system, and that is known as Kia. Kia is of Kotak Mahindra Bank. अब आप इसको कॉल कीजिएगा, आपकी वॉइस को वर्चुअली रिकॉग्नाइज करती, उस बेसिस पे आपसे डिटेल्स मांगती है। लाइक यू कैन से, अभी आपको पता था कि अभी आप अगर कॉल करते हो तो कस्टमर केयर पर देयर इज एन ह्यूमन एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व ओवर देयर, एंड दिस ह्यूमन एलिमेंट इज द वन विच इज रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज। आपकी क्वेरीज को, आपकी प्रॉब्लम को ये ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन ओवर हियर इन दैट केस सिनेरियो इज कि क्या आपसे पूछती है, यू वांट, व्हाट डू यू वांट, यू विल से क्रेडिट कार्ड। तो वो क्रेडिट कार्ड फीड है, वो क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछे कि बैलेंस जानना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, एक्सपायरी जानना चाहते हैं, प्रीवियस ट्रांजैक्शंस जानना चाहते हैं, यू कैन से दैट एंड दे विल अकॉर्डिंगली एक्ट, इट विल गोइंग टू बी अकॉर्डिंगली एक्ट इन दैट केस सिनेरियो। ठीक है, यानी कि हमने अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को देखें या कंप्यूटर जनरेशन को देखें तो हमने पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर को यूज किया। हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए कि मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए। फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर्स को यूज किया प्रोग्रामिंग के लिए, कि हम प्रोग्राम करते थे, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस देते थे और वो एक्ट करता था। जैसे हमारे पास विंडो है, दिस विंडो इज द वन विच इज डिजाइन, विच इज अ सॉफ्टवेयर, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग। जैसे ये क्या कर रहा हूँ, like if I am writing like something like that, what I am doing, I am giving a kind of instruction and accordingly it is acting as per that instruction also. थर्ड जो एरा आया हमारे पास कंप्यूटिंग में, थर्ड इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। थर्ड एरा ऑफ कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, नॉट एट पर साइज। वो जनरेशंस है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन or based upon the applicability of the computer applications, these computers have now reached up to this third generation, that is called what, that is known as cognitive computing. Computers are the one, our next agenda is what, that computer is the one which should be able to think by themselves. Computer should be equipped to think by themselves. उसके लिए उनमें मशीन लर्निंग इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि मशीन कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकती है। दिस मशीन लर्निंग शैल बी लाइक इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस कंप्यूटिंग सिस्टम। आप सभी लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, लाइक अगेन इक्विपिंग द मशीन्स with all the capacities, with all the functions that a human can do. हर वो काम जो इंसान कर सकता है वो मशीन क्यों ना करे। आप लोगों ने सोफिया रोबोट का नाम सुना होगा। सोफिया रोबोट इज द फर्स्ट रोबोट which has also got the citizenship. You might have heard of Lakshmi robot in case of India. It has also different capacity, that the different works that a human can perform. Israel is the one which is working on robotic army. ठीक है, Israel is the one which is working on what? Which is working on robotic army. तो अब रोबोटिक आर्मी पे इजराइल काम कर रहा है। सो यू सी ऑन डिफरेंट फ्रंट्स यू आर गोइंग टू यूज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, सो अब उसका जो बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। व्हाट इज द बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल? द बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निशन इनमें डेवलप करना होगा, तभी जस्ट अ मिनट, so then only they should be like able to perform like human. Okay, fair enough. I think things are making sense. Yes, it is good, right? It is good. I'm not denying that it is not good. It is good for human, like every technology is meant for human welfare, so till the time it is good. और अगर वो human welfare में नहीं है तो in that case scenario it has to be dealt accordingly. Just a minute, huh? Let me insert a new page in it. Now, next thing you see is, yeah, give me a second please. Yeah, next thing that you should see is, like we have left with one computing, and that computing is called autonomic computing. That computing is called autonomic computing.
व्हाट इज दिस ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग ऑल अबाउट? ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, देखिएगा। अभी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम, एज आई हैव सेड दैट इट इज अ ब्रेनलेस डिवाइस। हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर। द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज व्हाट? Sorry, they are known as program. Sorry, yeah, they are known as program. Set of instruction is known as program, and set of program is known as what? Software. On the basis of these softwares, we operate the computers. चाहे वो विंडो हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, या आपका कोई और डिफरेंट सिस्टम हो। जैसे अगर मैं आपको कह दूं आप MS वर्ड वगैरह यूज करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर द वन विच यू आर ऑपरेटिंग। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास यहाँ पर है, तो उसी के बेसिस पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। मान लो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? हमें उसमें एक एंटीवायरस डालना होगा। वी हैव टू पुट एन एंटीवायरस। आपके कंप्यूटर पे कोई स्पाइंग कर रहा है तो वी हैव टू पुट एंटी स्पाईवेयर। ठीक है, आपके कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज देयर। This human involvement is the must or requisite thing as regards these computers are concerned. But if I give you one more example, right? I am giving you one more example. जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर सिस्टम है, उसकी जो रैम है वो रैम है 4 GB। अब आपको एक प्रोग्राम रन करना है जिसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट इज नियर अबाउट 6 GB। ओके, और आपके जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव है आपके पास 50-100 GB। दिस इज हार्ड ड्राइव, दिस इज रोम। अब यहां पर अगर हम देखें तो अब ये जो हार्ड ड्राइव है, कैन वी ट्रांसफर दिस मेमोरी ऑफ हार्ड ड्राइव इनटू रैम, और कैन वी यूज इट एज अ रैम मेमोरी? दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। कैन वी यूज इट एज अ रैम मेमोरी? जो ये हमारी मेमोरी है, क्या इसको हम रैम मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं? दिस ऑल अबाउट दिस ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट दिस, कि इस हार्ड डिस्क की मेमोरी को हम कैसे रैम की मेमोरी में भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर एग्जांपल है, यूज कर सकते हैं। मान लो 500 GB है, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट थी 6 GB की, हमारे पास है कितनी? 4 GB। तो 2 additional GB would be transferred from here to RAM, and when this program that you are supposed to execute, you have executed, again this will be transferred back to this hard disk. This is about autonomic computing. So what is autonomic computing? Autonomic computing is the one which transfers, or you can say which allows a computer to execute the instructions by self. To execute the instructions by self, यानी कि किस तरह से कंप्यूटर अपनी इंस्ट्रक्शंस को खुद से एग्जीक्यूट कर सकता है, वो एग्जीक्यूशन ही हमारे पास ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग है। वही एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या है? ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग। अब हमने सारी कंप्यूटिंग्स यहाँ पे पढ़ी, क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमने पढ़ी, ठीक है, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग भी पढ़ी अभी, उसके बाद सुपर कंडक्टिंग भी पढ़ी, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग भी पढ़ी, उसके बाद और कौन सी कंप्यूटिंग पढ़ी? या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग भी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। तो इन सभी कंप्यूटिंग्स को जब हमने पढ़ा है यहाँ पर, तो इन सभी का हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रही है, और उसका जो बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स का अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था थोड़ी देर पहले, जो नए बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में what has happened is, like, we are going to connect various machines. Various machines are the one which shall act efficiently. देखो मैं यहाँ पे सब कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन बना देता हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग होगी तो साइज छोटा होगा, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग होगी तो वो कंप्यूटर्स को किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, सुपर कंडक्टिंग कंप्यूटिंग होगी तो बहुत फास्ट होंगे, बहुत स्पीडी होंगे, या ऑप्टिकल कंप्यूटिंग भी यूज की जा सकती है। और अगर कॉग्निटिव होगी, दिस मशीन्स आर द वन व्हिच शुड बी एबल टू थिंक बाय देमसेल्व्स, यानी कि आपको गीजर का बटन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से ऑफ हो जाएगा।
The computer can also suggest you what to wear based on the temperature outside. If it is a rainy weather, it can suggest you floral shirt. If it is hot, it can suggest you white shirt. अभी तो ऐसा नहीं करता. This is all about developing of Internet of Things, and this how these computing things can be certainly यूटिलाइज फॉर दैट पर्पजेज. बेटा इसीलिए तो हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की. यहाँ पर आप थोड़ा सा इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखिएगा तो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हैकिंग को रोका जा सकता है, किस तरह से क्वांटम हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी है. ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा लेक्चर, एवरीथिंग वुड बी क्लियर ऑन दैट नोट. ठीक है, आई होप दिस lecture was something, you people have gained something out of this lecture, and you see at least 5-10 questions have already been asked from this area that we have discussed, and in future also there is high possibility that number of questions would be there that would be asked from this area. ठीक है, तो आज के लिए अगर हम बात करें तो हम अपना जो फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के, उस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को हम आज यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. Tomorrow when we'll come up, I'll come up with ICT current affairs of 1 year combined up to October 2020. ठीक है, अक्टूबर 15 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को हम करेंगे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. और उसके बाद अगर हम देखें तो वी विल बी प्रोसीडिंग ऑन टू द फर्दर टॉपिक्स. ठीक है, और आपको कोई डाउट्स होगा तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर आप उसको पूछ सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Unacademy. If you are having the app, my name is Satveer Singh. Okay, and I'm also presently I'm taking the science and tech batch over there, and Unacademy Plus also. Okay, at Unacademy Plus also I'm taking this batches over there. Okay, if you want to follow me, you can follow me over there also. We are having some special session, and along with that I am having a comprehensive course on the science and technology at Unacademy Plus. Okay, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो or the lecture you can comment also. It's a kind of motivation for me, right? It will motivate me to go for like the better and better lecture series in the upcoming future. Okay, please do like and subscribe and share. Okay, till then do take very good care of yourself and have a very good night. Okay, happy Sunday.